concentrated H2SO4 or dry HCl to form ester, है ना. दिस रिएक्शन ना, ये बहुत पुराना रिएक्शन है. दिस रिएक्शन यू मस्ट हैव seen in the 10th standard also. I mean, this was present like for the test of alcohol and carboxylic acid. So if there is a sample and if you add carboxylic acid to it, okay, and it gives a sweet smell, then that means ester has been found, and that will be found only by the reaction of alcohol. है ना. उसी तरह carboxylic acid को टेस्ट करने के लिए आप alcohol डालिए. If it gives a sweet smell, it is an ester, है ना. And ester can be found only by the reaction of carboxylic acid and alcohol. So we have R, C double bond O, and OH plus H O R dash. ठीक है. So we have alcohol and carboxylic acid. अब इसमें जो रिएक्शन होता है in the presence of proton H positive, these two groups OH from the carboxylic acid and H from the alcohol is leaving, है ना. इस तरह से आपके पास रिएक्शन होगा. This will form water, and R from the carboxylic acid will be as it is. The C double bond O from the carboxylic acid will be as it is. No changes there. This carbon will make a bond with oxygen of alcohol, and the OR dash will be as this plus water. Okay. So this segment, it is coming from carboxylic acid, the carbonyl carbon, and the OR part, that is the alkoxy part, it is coming from the alcohol. Copy this down, then I will show you one reaction. उसके बाद आप लोग एक reaction खुद से कीजिएगा. Then we will also name esters, है ना. Esters का naming हम लोगों ने नहीं किया. We will also name esters. Waiting for Khadija and Mariam. Now, let's suppose we have carboxylic acid with three carbon atoms, COOH plus CH3OH. Okay. Now, in the presence of H positive, you should know the format के बनने क्या वाला है, where the reaction is going to happen. So everything will be as it is in the carboxylic acid apart from the OH. है ना? See, OH is breaking. So from the carboxylic acid, you will not write the OH. So everything as it is, you will only write CO. And how is the CO? CO will be C double bond O. Now, what happens with CH3OH? What bonds breaks here? The hydrogen is not there. है ना? Hydrogen यहाँ से निकल जा रहा है, right? The hydrogen will not be here. So what will be there? The carbon will be bonded with oxygen. जिसका bond टूटता है उसी का बनता है. So oxygen is breaking the bond, so oxygen will be forming a bond. Here carbon is breaking bond, so carbon will be forming a bond. So oxygen and carbon का bond बनेगा, and then you will have
CH3. Whatever was attached with oxygen, it is still attached. Whatever was attached with carbon, it is still attached. What was broken in the carboxylic acid, OH, so OH is not there. What was broken in CH3, OH, the alcohol, the hydrogen, so alcohol is not there. Does it make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान सुनिए जरा. Now, how to name this? If you guys remember, how do we name it? So first of all, we'll look at the functional group. So functional group is O8, that is an ester. So for ester, we write O8. For unsaturation, is there any carbon-carbon double bond or triple bond? No. That is why I will write An. And what is the parent carbon chain? So if I look at this carbon atom, this is the first carbon, this is the second carbon, this is the third carbon. For 3 carbon, I have to write prop. Now, after the identification of parent carbon, unsaturation, and the functional group, that is why we have done this much part. है ना? ये हम लोगों ने identify कर लिया है. We have remaining a methyl group is remaining, right? C double bond. This much part is done. इतना part हो चुका है हमारे पास, है ना? This methyl part is done. Methyl को हम लोगों ने यहाँ अभी तक नहीं identify किया. That means methyl will be a substituent. So methyl will be a substituent. ठीक है? अब देखिए, the name of this molecule is going to be methyl propanoate, propanoate, propane. ठीक है ना? Methyl prop an. As you can see, we are going just up. Prop NO8. ठीक है? This will be the name of the molecule. Let me give you one more molecule. इसका आप लोग खुद से बनाइएगा and you will also name it. U क्या है? Unsaturation. PD? It tells unsaturation का मतलब whether there will be double bond या triple bond है या नहीं, उसको बताने के लिए करते हैं. तो अगर सर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं वहां पर? YN. If there is no double bond between carbon only, है ना? कार्बन और ऑक्सीजन को वाला डबल बॉन्ड नहीं देखना है. कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर है, if you have double bond कार्बन के बीच में, then you will write En. If there is a कार्बन triple bond, then you will write Yn. If there is neither double nor triple bond, then you will write An. ठीक है? Now one more thing, if you guys don't know this SPUF method of naming molecules, please message me. I will send you a playlist, उसको आप देख लीजिएगा, फिर आपको आ जाएगा. देखने से नहीं आएगा, करने से आएगा. There will be a lot of questions in that playlist, तो आप करिएगा तभी आएगा. COOH plus 2 carbon atoms and OH in the presence of H positive. थोड़ा सा ना प्लीज अपने मतलब लाइक थोड़ा दिमाग ऑन करके सोच के कीजिएगा, लाइक हाउ द बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे टूट रहा है. देखिए जस्ट तोड़ के बनाना है ना. इट्स नॉट लाइक केमिस्ट्री तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं हो रही. यू हैव टू सी द पैटर्न कि किस तरह से कौन सी चीज टूट रही है, कहाँ पे जुड़ रही है. दैट्स ऑल. चलिए प्लीज डू दिस. सेंड योर आंसर्स ऑन माय व्हाट्सएप एंड आई विल गिव यू 2 minutes फॉर दिस. 2 minutes ज्यादा मत लीजिएगा. आई विल ब्रिंग अप माय टाइमर ऑल्सो. Yeah, 2 minutes has been started. यहाँ तक तो ठीक है. You have to name it also now. वेटिंग फॉर मरियम एंड खदीजा. कुछ तो करिएगा आप लोग, है ना? सोचते रहिएगा, कुछ नहीं होगा.
एटलीस्ट ड्रॉ दी कार्बोक्सिलिक एसिड विदाउट दी OH, ठीक है, उतना कम से कम, until unless you start to pick the pen up and start drawing it, आपको नहीं आएगा, जितना भी हम समझा दे आपको नहीं आएगा until unless you start doing it. Fine, Khadija and Maryam, please pick up your pen, draw the carboxylic acid without the OH and C double bond O को जैसे हमने बनाया वैसे बनाइए, and you can see that I have bonded with oxygen, तो then oxygen और oxygen के बाद जो कुछ हो रहा है वो सब करते जाइए, try to do it तभी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे now we can work on this, Maryam. Fine, Maryam, can you please turn your mic on? Yes, sir. ठीक है। Now look at the example that I solved and see the carbonyl carbon is attached to what atom? The first one we did ना, हाँ, carbonyl carbon जो है, हाँ, किससे अटैच हुआ है? O. Oh, I think you can do that now. अपने आंसर में वो चेंज कर लेंगे आप कि ऑक्सीजन, वहां पे कार्बोनिल कार्बन को ऑक्सीजन से ऐसे वन लाइन एंड देन ऑक्सीजन, देन यू विल स्टॉप। मेक सेंस? इतना कर सकते हैं? मेक सेंस? इतना कर सकते हैं? यू हैव टू स्टॉप राइट नाउ एंड देन यू हैव टू थिंक अगेन, उतना बनाइए पहले, मेक दैट मच वंस अगेन, रीड्रॉ द स्ट्रक्चर, डोंट आई मीन उसके ऊपर प्लीज डोंट रीराइट ऑन इट, कट द स्ट्रक्चर एंड अगेन ड्रॉ इट वंस अगेन। Khadija, I am waiting for your answer. If there is a blank sheet, we cannot work on it. You have to do something. Then I will ask you to think, see, and see. Then Mariam. Sir, I'm doing it. हाँ, ठीक है। Sir, how do you find functional group? हमें ओके, आप मैसेज कीजिए हमको क्लास के बाद, आई विल सेंड इट, लेट मी सेंड द प्लेलिस्ट यार। हम भी क्या मैसेज करो करते रहते हैं, वेट अ सेकंड। ठीक है, अब देखिए जरा, मरियम, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. नाउ लुक एट द रिएक्टेंट पार्ट। ऑक्सीजन के पास कितने कार्बन है? ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी कार्बन्स? One. काउंट इट, यू लाइक पुट योर फिंगर ऑन इट एंड देन काउंट इट, काउंट करके बताइए। 2 carbons. हाँ, ठीक है, यू कैन सी दैट व्हेन यू लुक एट इट इट सीम्स वन कार्बन, बट व्हेन यू काउंट इट इट इज हाउ मच? 2. है ना, तो हमेशा काउंट कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहीं पे मिस्टेक्स होते हैं ना, थिंक दैट इट फील्स लाइक वन, लेकिन कुछ गलती शायद नहीं, वन ही लग रहा है, लेकिन कुछ गलती शायद नहीं, कुछ वन नहीं लग, then you bring your finger up or your pen up and then you start counting, then you get the correct answer, ठीक है। so whatever the number of carbon atoms were attached on oxygen atom, that will be attached, है ना। आप याद रखना, यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से आपको OH हटाना है, यहाँ से आपको H हटाना है, and the bonding will be like this। खदीजा देखिए, आपका कुछ नहीं आया अभी तक, है ना, हम कितना इंतजार करें, कुछ भेजा अभी तक कुछ नहीं भेजा है, यही तो है ना, लाइक आई कैनॉट जस्ट कीप ऑन वेटिंग ऑन इट ना, एंड देन ऑक्सीजन एटम हियर। अब इस ऑप्शन पे 2 कार्बन थे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, कैन यू सी दैट? 1 कार्बन Yeah. हियर, सेकंड कार्बन हियर, लाइक दिस। I did that and then I cut it. हाँ हाँ, नहीं तो कट नहीं करना चाहिए था। अब नाम इसका, है ना, तो देखिए, इफ यू वांट नेमिंग, नेमिंग के लिए तो बेस्ट है कि आप हमको मैसेज कीजिए। नेमिंग इज 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में नेमिंग नहीं है, ठीक है ना। नेमिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट,
11th स्टैंडर्ड में आपने अगर नेमिंग नहीं सीखी है देन यू हैव टू स्टडी इट राइट नाउ। अगर हम आपको दिखाएं लास्ट क्लास में लाइक 11th में T1 2023 24 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सी द नेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, IUPAC nomenclature 30th September IUPAC nomenclature starts like this, see 1st October still we are on nomenclature, ठीक है। 7th October we are still on nomenclature, we are doing subsequent, अभी तक नेमिंग स्टार्ट नहीं हुआ है ना। स्लोली स्लोली वी आर मूविंग, सी यहाँ तक आए हैं। तो 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर, अब 8th लेक्चर में आई थिंक देयर विल बी, हाँ अब ये भी नेमिंग की ही पार्ट है। स्लोली स्लोली भी आप बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन बट स्टिल द नेमिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। राइट द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग, अब हम लोग पहुंचे यहाँ पे है ना नेमिंग में, ठीक है। तो वी स्टार्टेड एट 30th September, देखिए यहाँ पे फाइन, and on 8 October I am writing that write the IUPAC name, but still we have not covered the benzene thing। अब यहाँ पे बेंजीन आएगा फिर, ठीक है। there are some examples then for benzene, then some non conventional compounds, ठीक है। अब जाके खत्म हुआ, उसके बाद आइसोमर स्टार्ट हो रहा है। so you can see 31 2 3 4 5 lectures, 5 lectures are gone for what IUPAC nomenclature, है ना। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुरंत ऐसे कंपाउंड देखते ही आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, हो ही नहीं सकता है until unless you have done the work on it। जब तक आपने उसमें काम नहीं किया है नहीं आएगा नॉमेनक्लेचर, सिंपल एज दैट। मॉलिक्यूल को देख के नाम बता देना इट्स नॉट एन इजी थिंग, उस पे ऑब्वियसली देयर इज सम बैकग्राउंड वर्क दैट हैज ऑलरेडी बीन गॉन। जैसे अभी हम इसको बता के आराम से बता सकते हैं दैट दिस इज द इथाइल, दिस इज एन इथाइल ग्रुप, इसको इथाइल लेना है, क्यों लेना है वो मेरा दिमाग जानता है, ठीक है। बिकॉज वी हैव लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू मल्टीप्लाई थिंग्स, तो कितना क्विकली आप आंसर कर लेते हैं। दिस पार्ट इज व्हाट O8 and there are 1 2 3 4 carbon atoms without any double bond or triple bond, so this will be butano-8। now I hope you can see O8 is the functional group, AN is the unsaturation, but is the parent, and the substituent here is ethyl, so ethyl will be before this, ethyl butano-8, this will be the answer। correct। what yeah नहीं सर, सही लिखा था मैंने। आपने सही लिखा था, जी सर। वेरी गुड। चलिए राइट सम रिमार्क्स है। खदीजा क्या हुआ, आपने कुछ क्यों नहीं भेजा खदीजा? कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन खदीजा एंड टेल मी। Sir, my mom is out. आपका सही बना था? Yes, sir. I made a mistake over there. For ethyl. बट लेकिन आपको करेक्ट चलिए ठीक है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? Yes, sir. क्या हो गया आपको? Nazla. It's I had throat मौसम, pain since 2 weeks. आप रियाज कर रहे हैं क्या? Yes, sir. यार बेकार वेदर है रियाज का, बिल्कुल ही फालतू है बिल्कुल। हमको लगता है साल भर गला खराब होता होगा वहां पे लोगों का, नहीं? Yes, sir. साल भर गला खराब रहता होगा वहां पे लोगों का? No, sir. नहीं, साल भर नहीं रहता है। कौन से मौसम में नहीं रहता खराब? No. कौन से मौसम? It's the weather is changing वेदर इज चेंजिंग, ओके। द a little. प्रेजेंस Yeah. बड़ी ठीक हो। विटामिन डी का आप लोग टेस्ट कराइए भाई, सऊदी में रहने वाले लोग विटामिन डी का टेस्ट कराइए आप लोग। एक्सट्रीम लेवल्स पे आपके विटामिन डी का लेवल्स कम होगा, द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप ऑन, एंड इफ द विटामिन इफ यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, आपके इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है। उसकी वजह से लाइक ये जो छोटी छोटी बीमारी है ना सर, ऑब्वियसली वन थिंग इज वेरी गुड अबाउट सऊदी दैट यू विल नॉट गेट लाइक वेरी व्हाट आई कैन से सीरियस डिजीज आपको होने के चांसेस कम है ना। मतलब आई डोंट थिंक वहां पे मच्छर वगैरह है, राइट खदीजा? मस्कीटोज एंड ऑल No, sir. नहीं है ना, कुछ नहीं है। द आई मीन the air quality is also good, I mean it's not bad, right? Yeah. Air quality is good,
then whatever you get to, like the water is good, I guess, right? Yes, sir. Water is good. The food is also good. Whatever you are consuming there, almost each and everything is good. Just the weather is a bit weather. And why you are ill? You are only ill because you don't have vitamin D. अगर vitamin D आपके अंदर सही से होता, तो ये नजला जुकाम आपका बॉडी खुद से रिकवर कर जाता. विटामिन डी चेकअप कराइए. हम बोल रहे हैं डेफिशिएंसी होगी. दिन भर आप लोग घर के अंदर रहते हैं, फिर आप लोग गाड़ी में बैठते हैं, फिर आप लोग मॉल जाते हैं. लाइक like no part of your day is directly under the. Am I right? एक दो सेकंड की बात नहीं कर रहे. घर से Yes. निकल के सर, घर से निकलते गाड़ी में बैठते तो धूप लगती है मुझको, वो बात नहीं कह रहे हैं, है ना? तो Yes, sir. how will you get vitamin D? अगर सन से नहीं आ रहा है तो सन से मतलब सन activate some, I don't know what happens in the body, but sun activates it. ठीक है, तो वो नहीं हो रहा है तो कैसे विटामिन डी बनेगा? सीरियस प्रॉब्लम. आप या तो धूप में खड़े होइए सुबह सुबह के वक्त, थोड़ा मोड़ा 15 मिनट इज एनफ आई गेस, है ना? लेकिन टाइम देख के बिल्कुल ऐसा एज अ रूटीन यू हैव टू स्टैंड आउट, गेट विटामिन, गेट द सनलाइट एंड बी बैक. चलिए, द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप ऑन either, अच्छा, by the way, this is also known as Easterification because हम ईस्टर बना रहे हैं. The presence of bulky group on either alcohol or carboxylic acid reduces the rate of, give me a second. I'm sorry. Okay. So the presence of bulky group, either it is an alcohol or on carboxylic acid, it will reduce the rate of esterification. So I can say that the rate of esterification will be for alcohols. अगर हम बात करें, for alcohols,
CH3OH will be fastest, followed by 1 degree, followed by 2 degree, and then followed by 3 degree. Then write one more point. वैसे हम लोग बाद में भी देखेंगे phenols show similar reaction with carboxylic acid. Okay. So if I have carboxylic acid like this, C double bond O and OH plus H O, and then we have the benzene ring. So this is basically phenol. यहाँ से भी वही water is going to be leaving like this, and we will get C double bond O, O, like this. Okay. Now, what is this? So here we have the functional group. So this will be alkanoate, है ना? अगर CH3 हुआ तो methanoate, है ना? Here we have, sorry, not methanoate तो नहीं हो सकता. But we can have what? We can have ethanoate, propanoate, butanoate, and this phenyl group is the substituent. So the common name we can write it like this: phenyl. Depending on the R, it will be alkanoate, alkane OA. है ना? If there are two carbon atoms यहाँ पे CH3, C double bond O, यहाँ पे we can write ethanoate. There are three carbon atoms overall, then it will be propanoate, butanoate, and so on. Does this make sense? Is all please tell me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, everyone's done. Moving on. The third reaction is reaction with acid chloride and acid anhydride. And acid anhydride. So acid anhydride, it is CH3, C double bond O, and Cl plus HOCH3. Now, in this reaction, we use a catalyst which is pyridine. ठीक है, pyridine का क्या यूज होता है वो हम आपको बता देंगे. अभी हम बस अब देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा. The same thing is going to happen here. यहाँ से HCl निकल जाएगा फिर. ठीक है. तो अब HCl निकल, I mean you can see the reaction प्रोडक्ट बनाने का तरीका सेम है बिल्कुल. CH3 C double bond O will be as it is. CH3 C double bond O as it is. Then the bond will be with oxygen. Then the bond will be with CH3. Right? उसी तरह देखिए जरा. Here we have CH3, C double bond O, Cl with 1 2 carbon atoms, 3 carbon atoms, and OH. यहाँ पे वही pyridine है. So CH3 C double bond O will be as it is. CH3 C double bond O will be as it is. The C double bond O will be bonded to oxygen. This oxygen atom is bonded to 1 2 and 3 carbon atoms. So 1 2 and 3 carbon atoms. Does it make sense? Yes, sir. Yes. ठीक है. What is now acetic anhydride or acid anhydride? Anhydride is, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम anhydride बताते क्या होता है जल्दी से.
Raise your hand if you're done. चलिए. Like, what is anhydride or acid anhydride? So for example, if you have CH3, C double bond O and OH, and you have one more molecule, CH3, C double bond O and OH. Okay. If you remove water from this molecule, that means you are removing water from two acids. Both of these are carboxylic acid. Now the compound that will be formed will look like this: CH3, C double bond O, oxygen, C double bond O, and CH3. Okay. Now you can write it like this also. Same thing. और CC. जैसे पानी है ना, पानी में क्या होता है? You have oxygen and their oxygen is bonded with two hydrogen, right? तो दो हाइड्रोजन चाहिए तो हम इसको लिखते हैं H2O. Now if you look at this fragment is CH3CO. This fragment is also CH3CO. So I can write CH3CO whole twice and then oxygen. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. So this is acetic acid. And the anhydride, I mean, if you remove water, removal of water will give you minus H2O. It is going to give you acetic anhydride. Acetic anhydride. Okay, so this is anhydride. We have the उसको लिख लीजिए, then we will look at the reaction. Raise your hand if you're done. Just waiting for Khadija. So, now the reaction. So we have acetic anhydride, which is like this: CH3. Then we have C double bond O. Then you have oxygen. Then you again have C double bond O, and then you have CH3. Plus we need alcohol. So CH3 OH. Okay. So this oxygen atom, it has lone pair here. This oxygen atom, it has lone pair here. Right? This carbonyl carbon will be obviously delta positive because it is bonded with this oxygen and this oxygen also. Both of these will be pulling the electron density. So ये जो आपके पास oxygen atom है ना, which is from the alcohol, it is going to attack on this carbonyl carbon. ये वाला bond break होगा. As soon as this bond breaks, the oxygen will attack on this hydrogen atom because this hydrogen atom will be also having delta positive charge. ठीक है? First, this is the first step. This is the second, and this is the third. बनेगा क्या? See, this bond is going to break, है ना? This bond is going to break. So you will have CH3, C double bond O. Okay, this bond is broken. Now we have got a new bond with oxygen atom. So यहाँ पे oxygen, and this oxygen is bonded with CH3. ठीक है? अब इसके साथ क्या हो रहा है? Here we have CH3, C double bond O. So CH3, C double bond O. CH3, C double bond O. It is bonded with oxygen. This bond is still intact. So this bond is still intact. Oxygen. Now this oxygen is making a new bond with hydrogen. So this will be hydrogen here. So these are the two products that will be formed. Here we have ester, and this will be a carboxylic acid. Copy this down. Raise your hand once you're done. Let me write some remarks.
This reaction is aka is also known as acetylation, as the reaction introduces acetyl group. Acetyl group क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O. ये फ्रैगमेंट को बोलते हैं एसिटाइल, है ना? इसके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़िएगा. The next chapter, aldehyde, ketones, and carboxylic acid. You will understand what is the common name acetyl and formyl. These means. Sir, introduce the acetyl group in alcohol. Next point, why do we use pyridine? Please write pyridine is a base used to neutralize the acid formed during reaction. And it leads to rightward shift in equilibrium. Lee-Chatterjee principle अगर आपको याद है, if you decrease the concentration of product, the equilibrium will shift in the rightward direction. So we are getting acid in both the cases, whether it is anhydride or whether it is acid chloride. ना, in acid chloride we are getting HCl. यहाँ पे ना ये H और Cl मिलकर क्या बना देंगे? HCl बना देंगे ना. यहाँ पे लिख लीजिए भाई, HCl नहीं लिखा, HCl. ठीक है. So this HCl, if the pyridine reacts with HCl, the concentration of HCl will go down, and this reaction will go in the forward direction more and more according to the Lee-Chatterjee principle. Copy this down and raise your hand once you're done. यहाँ पे लिखिएगा phenols show similar reaction. Now this reaction is also important, and this particular part ये बच्चे मिस कर देते हैं. Preparation of aspirin. Preparation of aspirin. Aspirin is a medicine, no? That is why this particular reaction is important. This is there in the NCERT, ना? NCERT से बाहर हम नहीं पढ़ाते किसी. NCERT से हम पढ़ाते हैं बाहर if it is going to help you in the other part which is in NCERT. ना कुछ practice कराने के लिए I can give you some tough questions that would make the NCERT questions look easy. ना जैसे ये acetic anhydride कैसे बनता है, ये नहीं है आपके इसमें क्वेश्चन. कैसे बनता है, क्या मतलब इससे, ठीक है? बट थोड़ा आप लोग को अंदाजा लग जाए कि नाम वाम क्या होता है, नहीं होता है. You will be feeling a bit comfortable. That is why I taught it. So here we have CH3, CO, cold twice, and oxygen. Okay. When we do H plus here, then I will get the benzene ring will be as it is. Reaction will happen with the phenolic part. Na? This OH which is bonded to benzene ring, this COOH will be as it is. Now this benzene ring ka O will be as it is. This oxygen will be bonded to the carbonyl carbon as देखिए. अब oxygen किससे bonded है? Carbonyl carbon से, right? So carbonyl carbon से bonded होगा इससे C double bond O, and this C double bond O only has one CH3, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा. ठीक है. चलिए. This is aspirin or acetyl. This is salicylic acid. Salicylic acid. This is acetyl salicylic acid. All of you done?
Sorry. So the reactions which involve the cleavage of OH bond has been done. We are going to write the B type of reaction. Reaction involving cleavage of carbon and OH bonds, COH bond or CO bond. And this bond is going to break. This bond is going to break, CO bond. Now CO bond टूटेगा कैसे? तो ध्यान से सुनिए. Higher the polarity of CO bond, easier it is to break. To break the bond. Second point, as the number of, I hope this is understandable, no? Like if the carbon is having delta positive and delta negative is on the oxygen atom, it will be easier to break the bond because oxygen has already a lot of electron with itself. The electron को एक तरफ shift करने में आसानी होगी, and as the electron is shifted towards the complete set of electron is shifted towards oxygen atom, the bond will break. As the number of alkyl group increases at alpha carbon, the electron density around oxygen atom increases. Making the bond more polar and easier to break. More polar and easier to break. And the carbocation formed is more stable. Okay. Therefore, in this case, the reactivity is maximum for 3 degree, followed by 2 degree, followed by 1 degree, and then followed by CH3OH. Copy this down, raise your hand once you're done. इसके बाद वाला जो रिएक्शन है, we have already done this in haloalkane halorine. Hopefully आपको थोड़ा सा याद हो. ठीक है, ध्यान सुनिएगा जरा. The first reaction is reaction with hydrogen halide. You can write alcohols react with HX and form alkyl halides RH. है ना? So from the preparation of haloalkane हमने देखा था that ROH when it reacts with HX it will form RH plus H2O. Now if I look at the reactivity of HX, then in this case HI is very fastly reactive because the HI bond is very weak. HI bond can break very easily, followed by HBr,
and then followed by HCl. HF तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, रिएक्शन करता भी नहीं है. If I look at the reactivity of alcohol, it is going to follow the same that we have seen already. At 3 degree will be fastest, followed by 2 degree, followed by 1 degree, and then followed by CH3OH. ठीक है. Hopefully you guys are writing with me, है ना, इसमें रुकने की जरूरत नहीं है आपको. Now in remarks, write the first point. Due to lower reactivity of HCl with 1 degree and 2 degree alcohol, we use anhydrous ZnCl2 as catalyst. And this whole thing, that is HCl plus anhydrous ZnCl2, is aka Lucas reagent. Is aka Lucas reagent. Right, next. Lucas reagent is used for distinction of one degree, 2 degree, and 3 degree alcohol. याद है आप लोग को खदीजा, मरियम एंड यहिया? Yes, sir. Yes, sir. और अब मरियम यहिया याद है ना? ठीक है. होपफुली यू गाइस आर राइटिंग, है ना? कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बात है नहीं. ठीक. तो यहाँ पे अब हम डिटेल में चले जाते हैं. दैट वी हैव अल्कोहल प्लस HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 will give you RCl plus water. So this RCl, it has white turbidity, white TPT या फिर चूना. If you dissolve what I can say चूना या chalk powder and water, if you dissolve in it, how it will look like, that is known as turbidity, है ना. So white turbidity is present when RCl is formed. Turbidity when chloroalkane is formed, it has white turbidity in it, है ना, because it is not dissolved, it is not soluble in water. अब क्या होता है, when you have 1 degree alcohol in the presence of Lucas reagent, there will be no reaction at room temperature. Room temperature पे कोई भी reaction नहीं होगा, but turbidity on heating. आप हीट कीजिए तो turbidity मिल जाएगी. For secondary alcohol, in the presence of Lucas reagent, you can see turbidity after 5 to 10 minutes, है ना. आपको अगर 5 to 10 minutes याद नहीं रहे तो after some time लिख दीजिएगा. If you have 3 degree alcohol in the presence of Lucas reagent, you get turbidity instantly. You copy this down, raise your hand once you're done.
Just waiting for Khadija. Write a question. बोर्ड्स में आपके पास ना डिस्टिंक्शन का एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है? How will you distinguish this from this? How will you distinguish this from this? So the सवाल is, question is, how will you distinguish between propanol and propane 2-ol? See, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोपेन 2-ol क्या है. So this is propanol, 3 carbon atoms, and the first carbon atom is having OH. This is propanol. Basically 1 degree. प्रोपेन 2-ol, अच्छा 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकता है, तो 2 प्रोपेनॉल पे आप ऐसे दिल पे मत लीजिएगा यार 2 प्रोपेनॉल क्या होता है. इट इज प्रोपेन 2-ol ओनली, है ना. दिस इज 2 प्रोपेनॉल. सेकंड कार्बन में ना तो ऐसे बोल दिया जाता है, ठीक है ना. दिल में मत लीजिएगा, आईयूपैक नहीं है तो जरूरत है ना आईयूपैक ही बोले. वो आपसे पूछेगा, दे विल आस्क यू टू राइट आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नेमिंग, बट दे कैन से एनीथिंग, ठीक है. 2 प्रोपेनॉल to be ready for everything. So this is 2 degree, ना. This carbon atom, this alpha carbon is what 2 degree. How can we distinguish 2 degree and 1 degree? By using Lucas reagent. So answer कैसे लिखना है? Using Lucas reagent. आपको अगर पता है आंसर ना तब तो ऐसे लिख पाइएगा, नहीं पता रहेगा आंसर तो क्या ही लिखिएगा, है ना. हाउ टू राइट द आंसर, दैट आई एम सेइंग. 1 डिग्री, between 1 degree and 2 degree, how are you going to distinguish? You are going to use Lucas reagent. ये याद रहना चाहिए आपको, है ना. एंड वन मोर थिंग दैट इज, याद रहने के अलावा ये बात भी है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन 2-ol इज गोइंग टू बी, प्रोपेनॉल इज गोइंग टू बी 1 डिग्री एंड प्रोपेन 2-ol इज गोइंग टू बी 2 डिग्री. ठीक है, तो ये सारी चीज आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग दिखा रहे हैं. यूजिंग लुकास रिएजेंट, तो कॉमा दीजिएगा, देन यू राइट प्रोपेनॉल will give white turbidity, when treated with white turbidity, ठीक. But propane 2-ol propanol will give white turbidity on white turbidity on heating लिख दीजिएगा, ठीक है, on heating. हाँ. But propane 2-ol gives white turbidity after 5 to 10 minutes at room temperature. ठीक है, इस तरह से आंसर लिखना आपको. मेक सेंस? Copy this down, raise your hand once you're done. सबका हो गया है? फाइन. राइट द मैकेनिज्म फॉर दिस. मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसमें एक सवाल एनसीईआरटी का है, ठीक है. मैकेनिज्म, ठीक. फर्स्ट थिंग इज दैट 1 डिग्री अल्कोहल reacts with HX via SN2. ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या होता है इसमें. नंबर 1 स्टेप इज स्मॉल है ना, ये वाला थोड़ा सा उतना ज्यादा हार्ड नहीं है. HX इज गोइंग टू डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव. उसके बाद सेकंड स्टेप, यू हैव अल्कोहल ROH, ठीक है, तो प्लस HX में से H पॉजिटिव. This oxygen atom which is having lone pair, it is going to attack on the hydrogen atom like this. इससे क्या होगा? You have R oxygen which had H. Now it will have another H. There will be a positive charge. Third, the halogen atom, the halide ion will come, and you'll have R OH
and here also H, there will be a positive charge. अब ध्यान सुनिएगा जरा यहाँ पे. See, this oxygen atom will be pulling electronically towards itself. It has a positive charge, it will be pulling even more. This carbon atom will get the alpha carbon of alcohol will get a highly delta positive charge. As soon as it gets the highly delta positive charge, this negative halide ion is going to attack from back side. Now what will happen? You will directly get, as this attack is happening, that means the halide ion is forming a bond with carbon atom and the water molecule is leaving at the same time. है ना? तो SN2 reaction हो रहा है यहाँ पे. Here you are going to get Rx plus H2O. Right? So this is SN2. Copy this down. देखिए, नेक्स्ट सुनिएगा जरा 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में. 2 degree alcohols react with HX via SN. Therefore, they can give a rearranged product. ठीक है, ध्यान सुनिए जरा. Now, please don't write anything now. Rearrange product तक लिखिए, उसके बाद खत्म कीजिए, है ना. ध्यान से सुनिए. फिर देखिएगा, there's a reaction. This is in NCERT. This question important है ना. SCS3OH. In the presence of HBr, it will do a reaction, and we are expecting the OH will be replaced by Br. It will be something like this: CH3 as it is, and instead of OH, we will have Br. But we did not get this product. ये प्रोडक्ट हम लोग को मिला ही नहीं. ठीक है. So what product was formed? This product was formed. CH3 as it is, and Br on this position. है ना. अब ये हुआ कैसे, तो इसके लिए मैकेनिज्म हम लोग को देखना पड़ेगा. फाइन. नाउ ध्यान सुनिएगा प्लीज, एंड जस्ट टेल मी इफ दिस इज राइट और नॉट. हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर धीरे धीरे, है ना. ध्यान सुनिए जरा. We have this molecule like this. ठीक है. CH3 makes sense till here? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. This Yes. oxygen's lone pair is going to attack on the H positive. सही है. Yes, sir. And we will form everything as it is. This oxygen atom will now have 2 hydrogens with a positive charge. Makes sense till here? Yes or no? Please tell me. Yes. Now see, this oxygen atom will break this bond, take its electron and neutralize itself. So जैसे ये bond टूटेगा, you will be remaining with this here, and this carbon atom, since it has broken a bond, will get a positive charge. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. अब ध्यान सुनिएगा जरा. In this carbon atom, we have a hydrogen atom, right? It is making 3 bonds. One of the bonds will be with hydrogen. Make sense till here? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी को थोड़ा सा ना enlarge कर रहे हैं, है ना. Try to understand. यहाँ पे आपके पास this carbon atom is having positive charge, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है. यहाँ पे आपके पास क्या है? हाइड्रोजन. This hydrogen will be in what? इस तरह से होगा कुछ. यहाँ पे this positive charge will be because of the p orbital. P orbital will be vacant. Carbon is a p block element, है ना. Positive charge का मतलब absence of electron. Electrons, they are always in orbital. So in carbon, if I look, which orbital will be vacant? So p orbital will be vacant. And here we just nearby we have something. Nearby we have something which is like this: sp3 orbital and the hydrogens which is overlapping. Now there is a positive charge here, and the electrons, they have a wave nature. So can for a
for like 1 second, not even 1 second, for 1 instant, for 1 millisecond, can I assume, for a millisecond, can I assume that these electrons, they travel here? Yes or no, please tell me. Because electrons are of wave nature, यहाँ पे positive charge है, so this electron can move here. What do you guys think? For a millisecond, can it happen? Yes or no? 1 मिलीसेकंड के लिए अप्रोच कर सकते हैं हम लोग इसको ऐसे? Yes or no? Tell me. Yes, sir. बोल. Yes, sir. ठीक है. For 1 millisecond, what happens? Randomly speaking, electron they just move towards the positive charge. ठीक है. And ध्यान सुनिएगा जरा. Now what do we have a situation like this? Here we have CH3. Now the hydrogen has gone here. With its electron, the hydrogen has gone on this carbon atom. The hydrogen is here now. Now the positive charge it got its electron, that is why it is neutralized. Where the hydrogen was initially, that carbon will now get a positive charge. Does this make sense? Yes or no? Here the positive charge will be present. What do you think? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान सुनिएगा जरा यहाँ पे that this particular carbocation, it is a 2-degree carbocation. This particular carbocation is a 3-degree carbocation. This is less stable and this is more stable. Now, even if for 1 millionth of a second we form this 3-degree carbocation, this 3-degree carbocation will never go back. Does it make sense? Because it is more stable. Yes, sir. ठीक है. अब ध्यान सुनिए. अरे ये बात समझ में आया सबको? आया ना? बताएं. What about others? Yes, sir. Make sense? Yes, sir.